बाइक को बहुत ही दूर से। तो नाइट टू नाइट हाफ ग्राउंड। Best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. So guys, after a long time, मतलब एक हफ्ता हुआ बाइक को बिना राइड करते। 2 दिन से गांव में आया हूँ, लेकिन बाइक के पास एक मुलाकात के लिए भी नहीं गया। और बाइक को चलाने का आज कोई प्लान नहीं था। बाहर गया था, ज़्यादा आउटफिट भी नहीं है, जस्ट हेलमेट अटका के जा रहा हूँ, क्योंकि एक जस्ट शॉर्ट स्पिन लेके आने वाला हूँ नाइट राइड, क्योंकि कल सुबह जा रहा हूँ मैं। So not decided and planned motovlogs, just जा रहा हूँ तो बोला GoPro लगा लेते हैं। एंगल बहुत ही सेक्सी वाला मैंने करा है, जस्ट एक नाइट फुटेज अच्छी वाली सी आ जाए। पूरा हफ्ता मैं अपने अपाची पे निकल रहा हूँ इधर से जॉब करके पुणे में। मैं पुणे अपने बाइक को नहीं लेके जाना चाहता, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक और उसके इंजन का बहुत हिट हो जाएगा। और मुझे मेरी बाइक हिट होना बहुत पसंद ही नहीं है, इतने मैडली में लव में हूँ बाइक के। आपने सुना होगा कि अगर आप दो मतलब होते हैं, मतलब एग्जांपल से बताता हूँ, जो आपको हद से ज़्यादा आती है तो आप उसे संभालते हैं, उसकी केयर करते हैं, अच्छे से रखते हैं, ना कि वो तोड़ लेते हैं जस्ट लाइक अ फ्लावर। अगर आपको कोई फ्लावर पसंद आ गया तो आप उसे तोड़ के रख लेते हैं और बाद में उसे थ्रो कर देते हैं। लेकिन अगर आप कोई फ्लावर को रख रहे, पाल रहे, पोस रहे तो वो अलग मीनिंग है। सो आई एम कीपिंग इट माय बाइक जस्ट लाइक अ फ्लावर। पुष्पा, अरे फ्लावर समझे क्या? अरे फायर है। जस्ट टॉकिंग अलोन विद माय सीवियर। नाइट राइड बहुत ही कम कर दिए, बहुत ही कम। लेकिन मेरे को कल सुबह निकलना है 5 बजे और बाइक को चलाए बिना मैं पुणे को नहीं जाने वाला था। मैंने कमिटमेंट दे रखी थी बाइक को बहुत ही दूर से। सो नाइट टू नाइट हाफ ग्राउंड 10 किलोमीटर चला के आऊँगा, लेकिन बाइक निकालूंगा। That's why I have taken out on a forward ride. So now we are arrived at Sudhirdi.
आप साफ बोला। ओरिजिनल टाइमिंग कितना हुआ रे? वाह वाह, 9:18। बहुत ही सेक्सी भाग रही है सीढ़ियाँ, क्रेजी। मेरे को डे में इतनी फीलिंग नहीं आ रही, लेकिन जितना नाइट में बाइक के साथ आ रहे, प्योर एड्रेनलिन रश। लुकिंग एट माय CVR कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जस्ट लोग सर मुड़ा के देखे तक CVR इज गॉन। सो CVR इज नॉट अ बाइक, सो यू कैन जज ऑन पेपर वर्क्स। जो समझता है, जो रखता है, जो पालता है, उसे पता है कि क्या बीस्ट है ये। आई नो इससे भी ज्यादा बहुत ही अच्छे बाइक है, मतलब ज्यादा पावर वाले, ज्यादा एग्रेशन वाले, बट अपना अपना होता है यार। मुझे 200 घोड़े, 250 घोड़े, 130 घोड़े वाले बाइक से भी पसंद, लेकिन मेरे को मेरा CVR बहुत प्यारा है। सो मच क्विक, ज्यादा दूर नहीं जाते बैठेंगे, टोल नाका जस्ट एक राउंड मार के आ जाएंगे। टाय टाय टाय। तो पूरा अंधेरा छाया हुआ है, अंधेरों में अपने बाइक के साथ। If you still feel the fear, just drop a gear and disappear. ये वाला ब्लॉग में अपलोड कर दो, आपको भी बहुत मजा आएगा। जिनको मजे लेने वो ले लेंगे, क्योंकि यार मैं तो बहुत मजे ले रहा हूँ अभी फिलहाल को। आई विश आप भी ले लेंगे। सो जस्ट नॉन बाइकर पीपल विल सी वन गाय हु इज गोइंग फास्ट ऑन हाईवे, मेकिंग सम नॉइज। कौन है जा रहा है ये बदतमीज, ऐसे उसे कुछ तो गालियां देते हैं वगैरह बोलने के, लेकिन 10 to 15%, 1-2% लोग मेरे को बहुत ही अच्छे से देखते हैं, मेरे को बहुत ही अच्छे दुआएं वगैरह देते हैं, बहुत खुश होते हैं, और उनकी स्माइल देख के यार बहुत ही गार्डन हो जाता है। क्या हुआ रे बाबा इसको? मेरी हालत कर देता तू पिल्ला। Just guys, do good. It will come back to you.
एग्रेसिव में नहीं जाऊंगा बाइक के साथ, क्योंकि मैं फुल राइडिंग गियर्स में नहीं हूँ। कुछ लोग मैं भी कमेंट, बट मेरा यार बहुत ही शॉर्ट स्पिन मारने का मूड था, लेकिन जैसे मैं इसका हाईवे पे लेके आया ना, आई कांट कंट्रोल इट। भाई पावर देख रही है, पावर। वो Dad told me you have 100 horse in your hand. Just use it carefully, babe.